प्लान था। सो आज हम सब आपके पास सामने हैं। सो ये प्रेस मीट अरेंज करने के लिए आई वुड थैंक मिस्टर चरण, थैंक यू वेरी मच ब्रदर। एंड आप सब लोग आने के लिए को भी धन्यवाद है। और ये सिनेमा मैं बहुत खुशी से और गर्व से बता सकता हूँ कि ये पूरा कोर्स है ना, ये पहले राजू के बारे में बता देंगे। राजू इज गिवन इसका करियर में तो बहुत अच्छा मूवीज दिया है और वेरी सक्सेसफुल मूवीज दिया है, और इसका 3 या 4 सिनेमास इज अ सुपर हिट। और प्रॉबेबली अभी आप ये नेक्स्ट सिनेमा ये भी सुपर हिट हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रांड राजू है ना कंटिन्यू हो रहा है। और इसका राजू इज वेरी लकी फॉर हिम एंड लकी फॉर अस आल्सो। सो ये सिनेमा का अभी को स्टार का बारे में बताना है तो ये हमारा सब को स्टार्स है ना, ये हमारा साउथ का कन्नड़ा सिनेमा का टॉप को स्टार्स है, वेरी बिग को स्टार्स एक्चुअली। और सब लोग हमारे सिनेमा में काम किया है, और हमने 15 या 20 दिन लंदन में शूट किया हो और 2 सॉन्ग शूट किया है। और आपको संजीत हेगड़े पता होगा, संजीत हेगड़े अभी वो सिंगर है, वो साउथ इंडिया से हमारा बैंगलोर से है। अभी सोनू निगम जी के साथ भी एक सॉन्ग रिकॉर्ड किया था, और ब्रह्मास्त्र में केसरिया सॉन्ग वो कन्नड़ा वर्जन वही गाना वही गाया था। सो वो भी इसमें गाया है। और ये सिनेमा एक कॉमेडी और एक थ्रिलर भी है, और एक सोसाइटी को भी एक मैसेज भी है। सो व्हाट आई वुड पर्सनली फील इज well this cannot be branded as one language movie। ये हम ऐसा नहीं ब्रांड कर सकता है कि साउथ इंडिया का, इसलिए क्या है कि मेरा मंजुनाथ ने मेरा दोस्त को क्या किया कि चलो ये काम करेंगे, हम दूसरे लैंग्वेजेस में तो नहीं, हिंदी में तो ट्राई करेंगे, क्योंकि इट कैन बी टेकन इन हिंदी ऑल्सो। ऐसा बॉलीवुड नहीं है मगर नॉर्थ इंडिया, सो बेसिकली इट कैन बी टेकन नॉर्थ इंडिया। सो वो हमने ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है। आप सब लोग मीडिया लोग, थैंक यू सो मच मीडिया दोस्त लोग, आप भाई जो ऐसा है आपका ही, इट्स ओनली रन्स बिकॉज ऑफ यू ऑल पीपल। आप सब लोग का सपोर्ट चाहिए, प्लीज सपोर्ट करो। और ये सिनेमा हिट होने के बाद हम प्रॉमिस करेंगे अगले बार आएंगे इधर ही और एक पिक्चर बनाएंगे, और इधर से हम साउथ में जाएंगे। So please support us, and what else? You guys have any questions? Oh, okay, fine then. Thank you. बाद में बात कर देंगे. Thank you so much. And I will give it to Manjunath Vishwakarma. Thank you. Thank you so much. Good evening, everyone, and namaskar. First of all, I want to thank all the media people and the supporter of for this movie. I want to heartily thanks and welcome to this event. ये जो मूवी हम लोग पहले हमारा ओन लैंग्वेज में कन्नड़ा में बनाया था, जब दीपक और मेरा पार्टनर किरण और राजू ने मिलके मुझे एक स्टोरी सुनाया था अभी, तो अच्छा था। एंड देन हम लोगों ने सोचा इसको अच्छा बनाएंगे बोल के कन्नड़ा में एक अच्छा मूवी हमने बना दिया। और सॉन्ग 2 सॉन्ग जो है ना हम लोग लंदन में शूट किया, थोड़ा सीन भी लंदन में शूट किया हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने सोचा इसको जो है ना हिंदी में भी करेंगे बोल के। हिंदी का मतलब देन वी कैन डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस इंडिया एंड ऑल्सो वर्ल्ड वाइड भी जा सकते हैं, सबको दिखा सकते हैं बोल के। एंड वी हैव सम प्लान्स फॉर द फ्यूचर में। अभी कर्मा ब्रोस प्रोडक्शन जो लंदन का यूनिट है, तो हम लोग प्लान कर रहे हैं अलग मूवी जो है, नेक्स्ट मूवी जो है हम लोग बॉलीवुड से कुछ मूवी बनाने के लिए और पैन इंडिया भी बनाने के लिए प्लान है हमारा। तो सोचे ये मूवी को पहले हिंदी में करके देखें और कैसा रिस्पॉन्स है, हम लोग का एक्सपीरियंस कैसा है, तो बोल के हम लोगों ने ये मूवी हिंदी में भी किया। एंड मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये मूवी एक कंप्लीट पैकेज है, लव स्टोरी है, थ्रिलर भी है, एक्शन भी है। और दोनों जो है ना, राजू है बहुत अच्छा काम किया इस मूवी में, और हमारा एक्ट्रेस भी है वो भी बहुत अच्छा काम किया। एंड डायरेक्टर ने जो इनके साथ जो इनका टैलेंट जो निकाला है ना, बहुत अच्छा और खूबी से निकाला है। तो आई शुड डेफिनेटली thank him and appreciate him that for his hard work and इस
मूवी में जो काम किया, आई शुड डेफिनेटली थैंक दीपक। और दीपक के पास और एक स्क्रिप्ट भी है, बहुत अच्छा शूट करने वाला, लंदन में शूट करने के लिए, और बॉलीवुड का जो बड़े एक्टर्स को डाल के करने के लिए एक प्रोजेक्ट भी है, हम लोग वो करने के लिए प्लान कर रहा है। तो शायद इस साल में भी हम लोग उसको शुरू करने के लिए सोच रहे हैं। एंड अदर पार्टीज, हमारा मूवी में एक आइटम सॉन्ग है, हम लोग सोच रहे थे किसको ले बोल के, देन वी गॉट नेम अक्षदा पटेल। We have Miss Akshada with us, guys. Please एक तालियां हो जाए उनके लिए. She is a Mumbai girl and she has done beautifully in this movie. Definitely, you know, like next time we'll release her song as well. बहुत अच्छा काम किया इसने. So definitely, you know, like I thank Akshada Patel. So that's it, you know, like हम लोग मेहनत किया हुआ है, but I need all your support from the Bollywood. And then, you know, like please support our team and thank you all. Thank you, Mr. Vishwakarma. Thank you, Mr. Vadu. एक बात भूल दिया मैंने अक्षता पाटिल के बारे में बताने के लिए. I'm sorry. She has done a wonderful job. Wonderful job, and she's so much dedicated. I pray to God that she get back whatever she was before, and she do the best of the best, because she has given her whole means heart and soul for that song, and we will release that song too, and not now, probably in the later stage. बहुत अच्छा काम किया है उसने. Thank you so much, and I wish you all the best and good luck. Sorry, एक बात बोलना भूल गया था मैंने. इधर ये हिंदी को करने के लिए जो मेरे साथ सपोर्ट दिया है ना, राजीव है, he is the director of quite a few movies in Hindi, but he has helped me to complete this project in Hindi. So I thank him, and you know, like I want to be, you know, part of his future things. So thanks. And Karan is our Charan, if you can come forward. He is our coordinator in Mumbai for everything. You know, like I thank Charan also for organizing all this and coordinating. Thank you, Charan, and thank you. Thank you so much, sir. And I'll come back to our director, the captain of the ship, Mr. Deepak Madhuvanalli. Thank you. So, good evening everyone, and thanks for coming. First of all, Happy New Year to all. This is the only drawback of speaking at the last, because there won't be any left thing to speak. मैंने समझा कि प्रोड्यूसर सर ने वो अक्षता के बारे में छोड़ दिया, लाइक मैं बात करूँगा, वो भी बात करूँगा, और वो राजीव को पकड़ा, राजीव के बारे में मैं बात करूँगा. सर ने वो भी मेमोरी करके राजीव के बारे में भी बात कर दी. So really I don't know what to speak now. So पहले coming to the dubbed version. See, we dubbed in like April, May, I guess, here in Bombay में. वो हमारा राजू है ना, वो हीरो का संकेत मात्रे ने वॉइस दिया, वॉइस ओवर. संकेत मात्रे वो gives like for Tamil Dalpati Vijay and Allu Arjun. So he gave the voice to Raju character. He has done a fabulous job. The entire movie, he's done a really fabulous job. And the villain, the Shahbaz Khan, the senior artist of Bollywood, the veteran actor, he gave the voice to the villain. So for the entire process, Mr. राजीव ने बहुत हेल्प किया हमको, वो स्क्रिप्ट करने में और वो वॉइस को ट्रांसलेशन करने में और डबिंग आर्टिस्ट को अरेंज करने में. सो वापस चला गया. सो 16 years अगेन फिल्म के सिलसिले में डायरेक्टर बन के बॉम्बे में आना पड़ा. सो आई होप द बॉम्बे वेलकम्स मी इन अ गुड वे थ्रू दिस राजू जेम्स बॉन्ड. So it was very overwhelming listening to your like cheering for motion poster. Thanks for that. बहुत अच्छा लगा वो सुन के पीछे से वो आवाज. So we feel so good, like what you say, like for the art people, the cheering, the claps, the sound, that only makes us so good about it. And producers के बारे में बात किया तो
आप देख सकते हैं. So visually कोई भी इन्होंने compromise नहीं किया है. So it has come out so well. So you can witness that in both motion poster as well as the song thing. And as Guru Nandan, our so-called alias Raju, the famous brand name Raju. So I'm sure it will be a hat trick as our anchor Ishita said. So it will be a hat trick from our Raju. So he has done a very fabulous job. So he has done action, song and all. It's a very, very fabulously has done. And our debutant Mudula as well. So even if you watch the film, you won't feel like she's a debutant. So she has done a very good job. And coming to my technicians, like Anup Sarin has done the music. All 4 songs has composed very nicely, and even the background score. So the visuals were like by Manohar Joshi. They are like top technicians in Bangalore. And in Hindi, the music was arranged by B Show. So even he has done a good job. This song is sung by Altamash Faridi. So yeah, in February 14th we are releasing the cinema, and over the period we are releasing Akshata's song. Like that is one whole dance number. Like you can't sit on a chair simply. The whole 4 minutes it is like that foot tapping and that dance number. So she has pulled it off very nicely. Very nice, Akshata. Like you have to watch it actually. It is full of energy. Yeah, it has full of energy, that song. So, and we are going to release the trailer as well. So, one by one, we are going to meet oftenly. So, February 14th is our cinema release. We are releasing parallelly in Kannada and Hindi as well on February 14th. And this song is going to release on 11th morning in Kannada and in Hindi as well. Thank you. If you have any questions, you can. And one second, before that, Akshata will have a few words about our film and team. Namaste everyone, thank you so much for coming. I'm very, very, very grateful to be on this song, and I really like this song and the song energy. Of course, I have put so much energy and so much goodness of the song, but song, if you hear the song, it is amazing. You can't sit on chair and just listen the song. You have to dance on this song. It's something like that. And I was really Kumar sir, Kiran sir, the hero and the heroine. We had a great time while we are shooting. We shot, where we shot exactly? I forgot. Sandur in Kannada. It was amazing. The location was nice. We had a night shooting for 3 days. It was amazing, and I'm really looking forward to see this song. Thank you everyone. So now, Thank you so much. now we are opening the house for question answers, and we all welcome you to Bombay. And I'm passing on the mic to. Hi, well, firstly, my name is Mayur from Beyond Bollywood. Welcome to you all, everybody. I have 2 questions for Guru Nandan. Firstly, obviously, you're still very young in your career, and Touchwood, I think as they have said that you've given plenty of hits, and this name has stuck with you, Raju. But do you plan to have this name for every film of yours in future? So no, not exactly. Actually, but this year I have 3 movies. I'm planning to do a Hindi version also. So not Raju is no more Raju. This is maybe Raju James Bond is as a Raju is the last name. Yeah. Okay, and I was just reading about you. There was this story that I think you, as a child, you ran away to Bombay to become an actor. Yeah, actually. So, I mean, if you were in class 8, you might have been just like, what, 12 or 13 years old. Yes, not Mumbai, so Bangalore. Okay. So my hometown is from Bangalore, so 250 kilometers, Chikmagalur. So 9th standard I came to Bangalore, so becoming an actor. Can you tell about that time, if you can recall, like? No, it's an old story. Because I'm studying, acting is my childhood dream. When 9th standard I came, randomly I came to Bangalore. Then
I got back to Chikmagalur. Again, after some time, I came to Bangalore, acted in few serials, acted in small roles, movies also. Then I got first time Raju's first movie that become hit. Then you know the story. But as a child, when you ran away from home, you Yeah. come to Bangalore, and can you recall something about that experience? Who did you meet? And because it's quite a dangerous thing, no, for a child to run away from home. Yeah, that is very difficult actually. That time, because I wanted to become an actor. That time was because I'm watching all Kannada movies. I wanted to become an actor. Randomly, I came to Bangalore. Then I didn't get any chance. I don't, that time. Then my parents are searching actually. Then I gone back to Chikmagalur. I said I continue my studies. Thank you. All the best. Thank you. This is called destiny, guys. This is what made him a star, a shining star, right? Thank you. Hi, on this side. Hi, this is Astha from Awesome TV. First of all, congratulations. I am really liking everything what's shown on the screen. My question goes out to Mridula. What was it like working with Raju James Bond, and how excited or nervous are you even for the Hindi version? Thank you for the question. It was really exciting to work with Raju and then our director Deepak sir. The way he, he never thought, made me feel that I am new. So that's the way I like about the whole team. Just not about the newness. It's like जिस तरह उन्होंने मुझे प्यार दिया और मुझे अपना समझ के जो सिखाया, जो भी सिखाया, लाइक ऑफ कोर्स हिंदी में जो जब डब कर रहे थे तब भी बहुत खुशी होती है मुझे कि मेरा मूवी हिंदी में भी डब हो रहा है करके और यस थैंक यू My follow-up question, Mr. Gurunandan sir. You tell me about your excitement. That how is it? I'm so very excited. I'm so happy also because my Raju James Bond Hindi version is released in Mumbai. So I'm very excited. Thank you. Hi Gurunandan sir, this is Surya from Bollywood Crazies. You are coming from Kannada film industry, and I'm happy that you are releasing in Hindi version also. It's a big day today, you know. Nama Yash birthday is there, of course everyone is inspired by him, and Kannada industry has come a long way. So is there some pressure on you also to make a pan-India hit or give a pan-India hit after KGF and other big films, Katara, and now Raju James Bond? What do you think? Actually, we try to give a good product. Okay, hit and flop, everything is in your hand. Okay, so movie is very good. You should watch. You should make a hit. One more thing, is that you have played the Raju character earlier also in your films. So is this film has already released in Kannada and you are releasing right now, or it is simultaneously releasing? Simultaneously releasing February 14th. Yeah. Okay. Yes. Thank you. Kannada and Hindi. Okay. I have one question for director Deepak sir. Deepak. Yeah. दीपक सर, आपने कहा कि आप इसके पहले भी मुंबई आ चुके हैं, कुछ साल आपने काम किया स्टिंट, उसके बाद वापस आप होम टाउन गए, तो वो जाने का सफर क्यों आपने चुना वापस से, फिर वहाँ से एक नया स्टार्ट किया, ये क्यों आखिर, ये थोड़ा सा इस बारे में अगर बता सके आप? नो, आज का दीपक होता तो नहीं जाता उस समय लाइक I was with my I was with my director. That time I was an assistant director. So we were supposed to do one film in Bollywood, like in association with Sunil Shetty's Popcorn Motion Pictures, as I said. So I was here for 4 months for that project. Then we did some pre-production and all. Then unfortunately that project didn't take off. So 4 months I was at Popcorn Motion Pictures and we were staying in Goregaon. So the office was in Char Bungalow. So that time, that's the first exposure for me to the
in the industry. But that time I was so into my director, and as he went, no, so even I went with him back to the Bangalore, and we started doing Kannada films and all. As I told, in today's Deepak, I wouldn't have gone back to the Bangalore. So whether it's Shadu Bobula and Achyut Kumar, they are also big celebrities. We want them to also come to Mumbai. Are you planning to make them come to Mumbai with the trailer launch or some other? Yeah, definitely we do have plans. So we have to see their schedules, because you know that they are so much busy artists in like multi-language. They will be doing the films. So it's so hard to get them on board all together. So definitely, if that plan is there, if it works, so it will be great for us. या मृदुला जी, आपसे सवाल है, कैसा लगा आपको काम करके हमारे गुरुनंदन सर के साथ, और क्या लगता है हिंदी में फिल्म आने से फिल्म को और एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा और ये फिल्म ज़्यादा बढ़िया तरह से पैन इंडिया चलेगी? क्या कहना है आपका? मुझे बहुत खुशी हुई गुरुजी के साथ काम करके और ऑफ कोर्स जब हिंदी में रिलीज हो रहा है तो एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा है और बहुत बहुत एक्साइटेड भी हूँ मैं क्योंकि हम लोग हिंदी में डब किया है करके, और मेरा पहला सॉन्ग जो हिंदी में आया है वो भी देख के बहुत खुशी होती है।